Hi guys, welcome back to my YouTube channel. Today our topic is function in C, the most awaited topic in C programming. So even lots of students have problem in this topic, and this topic is very much important for all of you, those who have the C programming as a subject in their course. Either you are pursuing BTech, BCA, BSc Data Science, BSc in IT, BSc in Computer Science, whatever. This subject will be remain common for all of you, and you must understand each and everything about the C programming. But from others modules we have this function. Function is very much important. ये एक ऐसा मॉड्यूल है सी प्रोग्रामिंग में जो हर कोई जानना जरूरी है. हर स्टूडेंट्स को ये टॉपिक का इंफॉर्मेशन होना जरूरी है. नॉट ओनली द थियोरेटिकल इंफॉर्मेशन बट द प्रैक्टिकल इंफॉर्मेशन, हाउ टू इम्प्लीमेंट द प्रोग्राम्स यूजिंग फंक्शंस. फंक्शंस के बगैर हम प्रोग्राम्स नहीं कर सकते हैं. बेसिकली द फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट how much function is important, because C programming itself based on functions, because C programming is procedural oriented programming concept. It is based on procedural oriented programming concept. That means totally the program is divided into functions that we call procedural. So functions जानना बहुत ही important है हमारे लिए, हम लोगों के लिए. सी प्रोग्रामिंग में जिन लोगों को परेशानी है सी प्रोग्रामिंग में फंक्शन जैसे टॉपिक पे, ये वीडियो उन लोगों के लिए काफी इंपॉर्टेंट है. आखिर तक ये वीडियो जरूर देखना. और जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए इस चैनल को, प्लीज हिट द सब्सक्राइब बटन and like, share, and please hit the notification bell icon so you can get the latest notification about my videos. Okay, if you have any kinds of doubts related to functions, so this video will be very much helpful for you. So please watch this video till the end so you can get a deeper knowledge about the concept of functions. Okay, so this is also important for semester exams as well as technical interview, viva voice. Okay, so many things will be covered up in this sessions. So after watching this video you will not be having any problems anymore in your semesters. Okay, so try to stick with the session till the end. Let's begin with function in C. As we know, function is a one type of topic which is really common in every language. आप जिस भी लैंग्वेज में देखोगे कंप्यूटर लैंग्वेज में, वहां पे फंक्शंस है, मेथड के नाम से जाना जाता है, बिहेवियर के नाम से जाना जाता है. बट फंक्शन एंड मेथड आर द मोस्टली कॉमन टॉपिक इन ईच लैंग्वेज. अगर आपको इसके थियोरेटिकल नॉलेज है तो आप किसी भी लैंग्वेज में इंप्लीमेंट कर सकते हो. द ओनली थिंग इज डिफरेंट इज सिंटेक्स. फंक्शन इंप्लीमेंट करने का सिंटेक्स अलग होता है सी प्रोग्रामिंग में, जावा में अलग होता है, पाइथन में अलग होता है. हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में द ओनली डिफरेंसेस इज सिंटेक्स. ओके, द कॉन्सेप्ट विल रिमेन सेम. ठीक है, फंक्शन क्या होते हैं, क्यों यूज करते हैं, सारी चीज को डिटेल में समझेंगे. लेट्स बिगिन. फंक्शन इज अ ब्लॉक ऑफ कोड that perform a specific task. It's a way to group a set of statement to achieve a particular goal. किसी भी टास्क आपको अगर दिया जाता है, कोई भी टास्क को परफॉर्म करने के लिए अगर आपको करना है कोई भी टास्क को परफॉर्म, तो इससे पहले आपको समझना होगा कि वो टास्क कैसे परफॉर्म किया जाएगा. व्हाट वुड बी द लॉजिक टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क. ओके, सो किसी भी टास्क को करने से पहले आपको समझना है इस प्रोग्राम का स्ट्रक्चर को. अगर एक लार्जर प्रॉब्लम्स है, if I have given you a questions which is a type of problems, okay, so the larger module need to be divided into smaller modules that we call it functions. तो एक larger module को हम divide करते हैं function के basis पे, a chunks of code, okay, a segments of code. तो उन सारे कोड्स को हम ग्रुपिंग करते हैं. तो एक ग्रुप, लेट अज्यूम आई हैव गिवन टू डिजाइन अ कैलकुलेटर. अगर आपको मैं एक क्वेश्चन देता हूं जो डिजाइन करना है कैलकुलेटर, तो कैलकुलेटर कैन हैव मल्टीपल फंक्शंस. आप समझ रहे हो, कैलकुलेटर में आपको ऐड भी करना है, सब्सट्रैक्ट भी करना है, डिवाइड भी करना, सो मेनी ऑपरेशन यू नीड टू परफॉर्म ऑन कैलकुलेटर. इट इज नॉट ओनली वन फंक्शंस. तो आप दो तरह से प्रोग्राम कर सकते हो. या तो आप इंट मेन लिख करके सारे कुछ इंट मेन आपने लिखा और इस मेन मेथड के अंदर ही सारा प्रोग्राम आपने एडवांस कर दिया, सारे प्रोग्राम्स को लिख दिया, सारे ऑपरेशंस को. दैट मीन्स व्हाट, कि आपने लॉजिक्स अप्लाई कर दिया इन द मेन मेथड. इट विल बी वेरी मच कंफ्यूजिंग. ओके, सो जब भी आप कंपाइल करोगे कोड को, तो इफ एनी एरर विल हिट, देन व्हाट विल हैपन कि यू विल अनएबल टू आइडेंटिफाई प्रॉपर्ली कि कौन सा वेरिएबल आपने किस लॉजिक्स को रन करने के लिए यूज किया है, कौन सा वेरिएबल, कौन सा यूजर इनपुट किस ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए दिया है. It will be very much problems. Okay, it will really complex task. To perform any specific task easily, we use function. Fine.
इसलिए फंक्शन का यूज करते हैं। फंक्शन क्या करता है कि आपको जितने भी सारे ऑपरेशन है उसको एक ग्रुपिंग कर देता है, एक ग्रुप में डिवाइड कर देता है डिफरेंट नंबर्स ऑफ ग्रुप्स ऑफ स्टेटमेंट्स। जैसे कैलकुलेटर में ऐड एक फंक्शन है, सब्सट्रैक्ट अदर फंक्शन है, डिवाइड अदर फंक्शंस है, सो मेनी अदर काइंड्स ऑफ फंक्शंस आर देयर, मल्टीप्लिकेशंस एंड सो ऑन। सो हर एक फंक्शंस का एक मॉड्यूल तैयार करते हैं। So that means what? A groups of logics will be inside there. Okay, inside one function. उसी तरीके से subtract करना तो subtract का logic जो भी है, whatever the logics you are applying for subtraction of any types of variable, so उसका logic आप subtract operation में डालते हो, subtract function में डालते हो। फिर उसके बाद multiplication आता है जिसमें product होती है ना, numbers find करना है, उसका logic आप products में डालते हो। That means multiple types of functions you are creating. I have given a larger problem, so you have divided those problems into sub problems in the form of functions. Okay, that's the beauty of function. ये है importance. इसमें क्या होगा कि जब आप रन करते हो प्रोग्राम्स तो आपको अंदाजा है, आपको समझ है कि कहाँ पे प्रॉब्लम्स है, कहाँ पे एरर है, where you have got the error. You can easily identify, you can easily change the variable, change the logic. You don't have any problems while compiling the code, okay, while executing the code. This is one thing. So that's why you have seen it's a way to group a set of statements to achieve a particular goal. This is a set of स्टेटमेंट्स का मल्टीपल आपने लॉजिक लगाया। एक ऐसा लॉजिक है जो प्रोडक्ट्स फाइंड करता है, यूजर ऐसे इनपुट लेगा और प्रोडक्ट फाइंड करेगा, मींस मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 और 3 वेरिएबल्स। इसमें लॉजिक होना चाहिए, एक वेरिएबल होगा जो इनिशियलाइज करेंगे कुछ वैल्यू से या यूजर इनपुट से लेंगे, फिर उसके बाद प्रिंट करना है नहीं करना है, दैट इज अ डिफरेंट थिंग्स। ओके, सम लॉजिक सप्लाई करना है, a into b into c समथिंग लाइक दैट, एक वेरिएबल में स्टोर करना है। दिस एंटायर लॉजिक विल बी बेस्ड ऑन ए स्पेसिफिक टास्क, दैट इज गेटिंग अ प्रोडक्ट, गेटिंग अ सम, फाइन। सो किसी एक स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए मल्टीपल स्टेटमेंट्स को आपको अपेंड करना है, दैट्स द वे। सो दैट्स व्हाई वी हैव सीन टू अचीव ए पर्टिकुलर गोल। तो फंक्शन क्या है? एक ब्लॉक ऑफ कोड है, इट्स अ ब्लॉक ऑफ कोड, एक टाइप का ग्रुपिंग करते हैं मल्टीपल स्टेटमेंट को टू अचीव ए पर्टिकुलर task, particular goal, to perform any specific operations. Hope all of you have understood. So इस logic, इस understanding को हम किसी भी language में apply कर सकते हैं, but the only thing is that we need to understand functions in depth, theoretical. इसी logics को apply करने के लिए आप different syntax use करेंगे, different methodology of implementation function in different language will be differ, okay, will be variable, that is not same. अगर आप C में implement करें functions को, ये एक सेम नहीं होना चाहिए, सेम नहीं होगा, सिंटैक्स माइट बी डिफरेंट बट लॉजिक्स विल ऑलवेज रिमेन सेम। लाइक फंक्शन में क्या होगा, रिटर्न टाइप होगा, नहीं होगा, फंक्शन नेम होगा, देन पैरामीटर्स होगा, दिस कुड बी कॉमन इन ईच लैंग्वेज। तो डोंट बी कंफ्यूज। अगर आप फंक्शन सीख रहे हो, इफ यू आर लर्निंग फंक्शन इन योर सेमेस्टर, आइदर फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर, व्हाटएवर, this will be helpful for you in upcoming semester because the function concept will remain same, only is changing is about the syntax, about the way of writing code. अगर आप java कर रहे हो, that will remain same, concept will always remain same. Okay, hope you have understood the concept, and the most important thing is that कि अगर आप function learn कर रहे हो, it is also very much important for your interview, for your viva. It is not like you can let it go easily. No, function is very much important, and you can also have a technical round. So many things are there. So MNC's interviewer and lots of when you face viva in your semester exams, then you will also analyze from function, the examiner can ask the questions. So hope these things you have understood. Now moving to the next, like functions की क्या क्या features है, what we know about the features of functions. किसी भी modules का एक इंपॉर्टेंस है, लाइक आपने एरे पढ़ा है, एरे का कुछ इंपॉर्टेंस है, वेरिएबल्स पढ़ा है, वेरिएबल्स का कुछ इंपॉर्टेंस है, पॉइंटर पढ़ा है, पॉइंटर्स का कुछ इंपॉर्टेंस है। सो ईच एंड एवरी मॉड्यूल्स इन द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मस्ट हैव सम स्पेशलिटी, यू जस्ट अंडरस्टैंड दिस। कोई भी आप मॉड्यूल्स को छोड़ नहीं सकते हो, किसी का डिसएडवांटेजेस है, किसी का एडवांटेजेस, बट फंक्शन में आपको एडवांटेजेस मिलेंगे। Lots of advantages are there. Without function, you won't be able to write up a large number of codes. Okay, large lines of codes. You cannot do so because lots of hurdles you will face. Okay, that's why we have the concept of function. First feature हम जानेंगे reusability. The first features, or you may say the advantages of function is reusability. Reusability code means क्या करते हैं? अगर आप एक बार functions को mention कर दिया, define कर दिया, तो आपके throughout programs में जब भी आप चाहेंगे कि उस function को use करना, तो वह बार बार कॉल करके, यू कैन जस्ट राइट डाउन द कॉल स्टेटमेंट एंड यू गेट द executed of the function multiple times that defined function can be called.
So you don't have to write every time the same function. अगर आपने add का कोड लिख दिया, एडिंग ऑफ मल्टीपल नंबर्स, कुछ कोड आपने लिखा है, लॉजिक्स लिख दिया है, फंक्शंस मेंशन कर दिया है एडिशन के लिए या फिर मल्टीप्लिकेशंस के लिए, तो दैट मींस क्या हो रहा है कि ओनली कॉलिंग दैट फंक्शन यू विल गेट दी वर्क डन, task will be done. So no need to again and again write. So that's why we call reusability. So reusability code is one of the most important advantages or the features of function. You don't have to write once, use everywhere, use every time. Like आपने मोबाइल फोन में देखा है, calling is one function, typing is another functions, clock is another functions, timing is another function. So many things are there. Alarm is another functions. So many things are there which is common in each mobile phone, in every mobile phone. That means some amount, some statement of code is already written there, some function is already written there, which only just called by the system. Like Android applications is there. So Android is a application software, system software. So multiple applications can have this system, can install on this system software. That means Android is doing what? Multiple tasks for each application. Some task is common for multiple application like opening and closing. So these are the various tasks which is in common. The code is written and it is calling by multiple applications. Okay, so the code cannot be need to write again and again for each specific task, okay, which is common. So try to understand, write once, use multiple times. That is the beauty of functions. Modularity. Modularity means क्या हुआ कि अगर it is not about like write a programs for a calculator, but it is also write a programs for complex tasks, for complex projects. Okay, so अगर आप किसी सिस्टम को रन करना चाहते हो, सिस्टम सॉफ्टवेयर बनाना चाहते हो या ड्राइवर प्रोग्राम लिख रहे हो, okay, C program is not applicable for application software. Just keep it in mind. It is always for microcontroller programmings, hardware programmings, okay, system software, compiler design, and these are the area where you can apply the C program. Okay, because C program is high level language. तब अगर आपको हार्डवेयर प्रोग्रामिंग करना है, if you want to do the hardware program, so lots of large chunks of code you have to write. अगर कहीं पे भी एरर अगर आपको मिल जाता है, if you find any error in anywhere, so that means what? So modularity. Modularity means what? कि अगर आप उस एरर को इजीली आप आइडेंटिफाई कर सकते हो, ठीक है. मॉड्यूलरिटी मींस व्हाट? कि आपने एक लार्ज प्रॉब्लम्स को डिवाइड कर दिया है सब प्रॉब्लम्स में मॉड्यूल वाइज. Okay, a large problems I have given which have 100 lines of code, you have used function and you have used only 20 lines of code with the help of function. You don't require 100 lines of code write again and again. So क्या हुआ, आपने 5-6 फंक्शन यूज किया, हर एक लाइंस ऑफ कोड कंसिस्ट एक ब्लॉक ऑफ कोड जिसको कहते हैं फंक्शन में. आप सिर्फ उसी फंक्शंस के अंदर मॉडिफाई कर सकते हो. जिस एक फंक्शंस का दूसरे फंक्शन से कोई भी डिपेंडेंसी नहीं रहता. वन फंक्शन इज टोटली इंडिपेंडेंट विद अनदर फंक्शन. ओके, सो जैसे एडिशंस ऑफ ए नंबर, सो दैट मींस एडिशंस का लॉजिक अलग है जो कि एक फंक्शंस के अंदर है, मल्टीप्लिकेशंस का लॉजिक अलग है जो अलग फंक्शंस में, दैट इज कॉल्ड ब्लॉक ऑफ कोड. सो दैट वी कॉल्ड मॉड्यूलरिटी. मॉड्यूलरिटी मींस व्हाट? टाइटली बाउंडेड. It cannot like leakage of the variables, leakage of the logics from one function to another function. Each functions are totally independent with each other. Fine, but they are performing a specific task under one larger problems. Hope you have understood the concept of modularity. Next one we have simplified code debugging. Code debugging means what? जब टेस्टर टेस्ट करते हैं प्रोग्राम्स को, सॉफ्टवेयर को, ओके, तो सॉफ्टवेयर में कोई एरर आता है, किसी लाइंस ऑफ कोड में गड़बड़ आता है, या आप जब प्रोग्राम लिखते हो, टाइप करते हो सिस्टम में, कोई भी अगर काउंटर अटैक होता है किसी एरर से, कोई भी एरर को जानना होता है, अगर आपने नॉर्मल इंट मेन के अंदर किया तो इट विल बी वेरी कॉम्प्लेक्स टास्क, because hundreds and hundreds variables you will require to write to take initialize and to apply logics. But when you use function, that means what? It will give the error and you will easily find where is the error. You can identify where is the error and you can just modify the error. You just update the problems, rectify the error. Okay. See, that means simplified code debugging. It simplified the code. आप जब देखोगे प्रोग्राम्स देखते हैं कि आपको समझ में आ जाना चाहिए कि ये फंक्शंस रिलेटेड कोड है. कोड इज रिटन बाय यूजिंग फंक्शन. विदाउट फंक्शन वो भी आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि functions, the block of code written in such a manner, you will see and you will analyze such a beautifully it has been written, how it followed the syntax, how it followed the paragraphs. So many things are there which is systematically designed when the program is written in a function.
you can easily understand the things easily, better than नॉन फंक्शन बेस्ड प्रोग्राम्स. ओके, सो एक फंक्शंस को बेस्ड प्रोग्राम्स को आप इजीली देखकर समझ सकते हो, वो फंक्शन से लिखा है, इजीली आप उसको अपडेट कर सकते हो. दैट मींस सिंप्लीफाइड कोड डिबगिंग. सो दैट्स ऑल अबाउट द फीचर्स, एडवांटेजेस यू मे से अबाउट द फंक्शंस. फाइन. नाउ फंक्शंस को लिखा कैसे जाता है? किसी भी प्रोग्राम से स्टार्ट होने से पहले इसको सिंटैक्स जरूरी है. यू मस्ट अंडरस्टैंड दिस सिंटैक्स, हाउ टू राइट. सिंटैक्स मींस क्या? एक ढांचा, स्ट्रक्चर, कैसे हम फंक्शन को डिफाइन करते हैं, डिक्लेयर करते हैं. देयर आर टू कॉन्सेप्ट, वन इज डिक्लेरेशन, अनदर इज डेफिनेशन. सो डिक्लेयरिंग फंक्शन मींस सिर्फ आपने फंक्शन को डिक्लेयर कर दिया, हाँ ऐसा फंक्शन है, एग्जिस्ट करता है प्रोग्राम में, दैट इज कॉल्ड द डिक्लेरेशन. बट उसकी बॉडी मिसिंग है, द एंटायर लॉजिक इज मिसिंग, दैट वी कॉल्ड द डेफिनेशन इज नॉट देयर. ओके, अगर सारी बॉडी है, body of the function is present, declaration is there, the entire things combined together called a definition of the functions. तो दो तरीके से we understand the functions. ठीक है, यहाँ पे आप सिंटैक्स को देखिए. रिटर्न टाइप, सबसे पहले फंक्शंस का क्या होता है? रिटर्न टाइप. रिटर्न टाइप दो तरह के हो सकते हैं, या तो इंट, फ्लोट, डबल. ये कैटेगरी जो रिटर्न करेगा वैल्यू. Returning the value means what? It will return. It will calculating and returning the value. It will not display any message. It will not prompt any message. Okay, except the value. So it will only return the value. We can write int or we can write void. Void will not return the value. When we write void, it does not return any value. This things you need to understand. ये आपको जानना होगा. जब भी आपको वैल्यू को रिटर्न करना है, कैलकुलेट करके वैल्यू को रिटर्न करना है, बट आपको डिस्प्ले नहीं करना है, किसी भी मैसेज को डिस्प्ले नहीं करना है, तब आप इंट का यूज कर सकते हो, फ्लोट भी यूज कर सकते हो, डबल भी यूज कर सकते हो. बट जब आपको वैल्यू रिटर्न नहीं करना है, व्हेन यू डज नॉट वांट टू रिटर्न एनी वैल्यू, देन यू हैव टू यूज वॉइड. फंक्शन के नाम से पहले वॉइड या इंट लिखना जरूरी है. उसके बाद आप फंक्शन का नाम लिख दो, जैसे आप ऐड लिख देते हो. ठीक है, उसके बाद आप पैरामीटर लिख दो. पैरामीटर मींस व्हाट? कि किस वेरिएबल्स पे ऑपरेशंस आपको करना है, आइदर एडिंग ऑफ 2 नंबर्स, 3 नंबर्स और 4 नंबर्स, व्हाटएवर. अगर आप लिखते हो इंट ए, इंट बी, दैट मींस ये दो वेरिएबल्स पे आपको ऑपरेशंस करना है, एडिशंस ऑपरेशंस. फाइन. सो ये हो गया. इसको कंबाइन टुगेदर, द एंटायर थिंग इज कॉल्ड फंक्शन सिग्नेचर. मेथड सिग्नेचर बोलते हैं जावा में, पाइथन में, इसमें हम कहते हैं फंक्शन सिग्नेचर. द एंटायर थिंग्स ये कंबाइन टुगेदर. और इसको जब हम इस तरीके से लिखते हैं, जब व्हेन वी राइट दिस वे, अगर इसमें हम सेमीकोलन दे देते हैं, ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस थिंग्स. जब आप प्रोग्राम देखो, जब आप कोड देखो, तब आप खुद से समझ जाओ कि इसमें क्या है. आइदर इट इज अ डेफिनेशन और डिक्लेरेशन. ओके, सो जब कभी भी आप देखना ये देखना void add int a int b, दैट मींस क्या हो रहा है, यहां पे सेमीकोलन. इसका मतलब ये है कि आप जो है डिक्लेयर कर रहे हो, यू आर डिक्लेयरिंग द फंक्शन, दैट मींस यू आर डिक्लेयरिंग द फंक्शंस. यहां पे क्या है? सेमीकोलन. इट मींस यू आर डिक्लेयरिंग द फंक्शन बट नॉट डिफाइनिंग द फंक्शन. अगर इसके अंदर बॉडी है, दिस इज कॉल्ड द बॉडी ऑफ द फंक्शन. अगर इसके अंदर कोड लिखा है, लॉजिक्स है, ए का वैल्यू क्या होना चाहिए, बी का वैल्यू क्या होना चाहिए, यूजर इनपुट होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, लॉजिक्स लिख रहे हो आप, सम इक्वल्स टू a plus b, whatever. If you are writing those things, then it become a complete definition. Understood? ये complete definition हो जाता है. ठीक है, ये फंक्शन को आप दो तरीके से लिख सकते हो. You can write in two way. Either at the beginning of the program after hash include str.h, beginning में लिख सकते हो फंक्शन definition, the entire definition. जब आप entire definition लिखते हो, you don't require at the beginning to write declaration. Declaration लिखने की जरूरत नहीं है आपको. जब आप फंक्शन को मेन मेथड के बाद लिखते हो, when you are trying to write the function, write the function after main method, then you have to declare the function name at the beginning, just before the end method, main method. ये आपको जानना जरूरी है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे को, many of the students have faced lots of problems regarding writing of the code, implementing the concept of functions. This is the major issue faced by many of the students. So ये सबसे बड़ा problem है students के अंदर. While writing the function code, they have these kind of issue कि method जब function आप define कर रहे हो at the beginning या फिर at the end, या means after end main method or before main method. The simple things you need to understand. अगर आप functions को main method से पहले लिख रहे हो, define कर रहे हो पूरा the entire body of the function, definition अगर लिख रहे हो main method से पहले, then no declaration is required at the beginning, because the definitions itself declaring at the beginning before main method, no declaration is required. But अगर आप main method के बाद after main method you are defining the functions, then because the compiler execute once it see main, so main से ही start होता है execution. जैसे main method में entry करेगा तो it will search
is there any function written? No, because you have started with the main method. तब आपको डिक्लेरेशन जरूरी है बिफोर मेन मेथड. मेन मेथड से पहले डिक्लेरेशन जरूरी, बिकॉज फंक्शन आप मेन मेथड के बाद लिख रहे हो. दैट इज द की पॉइंट यू नीड टू रिमेंबर. आई विल शो द वन एग्जांपल, यू विल बेटर अंडरस्टैंड. ओके, so I hope this things helpful for you. You can try different kinds of small programs, okay, small problems, so you will get to know how to write up the functions. Okay, without practicing, coding is not possible. For coder, you want to become a coder, you want to understand fully in depth about the coding or the programming language, so you must have to practice. Okay, you must have to first go through the theoretical understanding. Once you clear up with the theoretical knowledge, you move on with the practical implementations. Okay, so hope you have understood these things what I have explained. Now I will explain along with one good example, so you will be able to understand it in depth. Fine. This function topic is very much important for your viva, for your technical interview, for your semester exam. Either you are preparing for any competitive exam, this topic is very much helpful. Okay, so don't miss this videos in between. You just watch it till the end. Those who have not subscribed my channel, again I am requesting you to please subscribe my channel, like and share. Okay, so you will get a latest notification about my upcoming videos. Now let's continue. So I'm having examples. One is add, another is multiply. These are the two functions I have to design in my program. Two functions. One is addition of number, another is multiplications. Two functions we have. So how to write up the code, how to implement the program using functions. So this is very much important. Try to give full focus. Fine. Hash include stdio dot h. It means what? Hash include stdio dot h. This is a pre-processing. That means this is the library where we have a standard input output operations done. When you have to take the input, we have to the system need to give the output. For that reason, we have this one. This is the mandatory line. Until or unless you will not give the input or get the output. Okay. Hope you have understood. Hash include. That should be hash include. Okay. Hash include stdio.h. This is the way. Okay, don't miss. Try to practice. Okay, this is the way to write. Correct it. You can note down in your notebook. Okay, take a note about these entire explanations. Fine. Two way I have explained. First, you can write down the method name at the beginning before the main method. Then no declaration is required, or after the main method when the declaration is required. So I am doing the first way, declaring the method at the beginning. Means defining the method at the beginning. How? See. First method name is what? Add. Adding of number. Then we can say int add. Type is the int. Okay. Parameter I am giving int a, int b. So what I have given? This is the function name. This is the function name, and this is a return type. Return type means it will not display any message. Okay, it will only return the value. After calculation, it will throw out the value. Okay, that value will be accessed by the main method. Fine. So two variables we have taken, int a, int b. Then inside these functions, we need to write up the, what we need to do? We need to write up the concept. What concept we need to write? Like we have to write here int sum equals to a plus b. Okay, return sum. Hope you have understood this one. Or you can directly return. Either you can write directly, you may write return a plus b. It is also possible. Return a plus b. You have taken the value and it will return the value. Fine, no issue. This is one method. This is the body of the function int add. Another function, what we have? Multiply. Now we are taking multiply with void. Void multiply. This is another function. First function ended. Opening curly braces, closing curly braces. The entire logic
whatever you are applying for addition of two numbers, that will be inside this main method, inside this body, opening and curly braces. The body, the logic will be inside here. This is void multiply, another function we have. It means what? Some variable you have to take, that is a local variable, we call it local variable. It could be same, no issue. Int b, okay, int a, int b. Now you can see we have the body of this method. What would be the body? I'm taking one variable name, int product equals to what I am printing here? Int product equals to a into b. What I'm writing here? I'm writing the logics inside the body of this function that we call multiply, and the function included with void. That means it does not return any values because of void. First function I have written here with int, that will return the type, that will return the value. How? Returning sum, return sum, return a plus b. You can see either you can write return ab directly, or you may follow this one. Okay, I have written this one. Either you can write this two line, or you can write just one line, a plus b, return a plus b. Fine. Void int, this is the, now you can print f the sum equals to percentile d n, then where the value we have? Product. Fine. So can you see this one? The difference, when you have taken int, that is returning the value, it is not displaying the message. But when you take void, it does not return any value, but it will calculate and display the message. That means printf is only available inside void. It is not applicable inside int type of method that we call function. Fine. So it has calculated in product a into b, whatever the value of a and b, that will be saved in product, and product will be displayed here. This is the product value. That means whatever the values a b, that will be printed. One function, first function and the second function done. This is the way when we write down the function name at the beginning. Now I'm just writing here. Okay, so try to understand main method and main. This is the main method where the compiler start execution. Fine. So once that the compiler came here, and it will start executing the line of code, it will see what first variable should be written here, which is called global variable. Int x equals to 10. Next one is int y equals to 5. So two variable assigned with value 10 and 5, which is global, not the local variable. Okay, two variables I have given. Now what it will see? The function calling. The function calling must be inside the main method. I have already given the body of the function here. Definition we call it. This is called the definition. Okay. So but the method calling, function calling, we can say how we call out the function. Now this is the int now, which will not display any message. Display will be here inside main method. First we need to understand that we need to call out the function. Int addition, I'm taking a variable name addition equals to calling out the function. For the function name, add is the function name, and the parameter I'm passing, which parameter? The global variable, which have two value, x and y, 10 and 5. Along with this function call, this is the function call. How to call out the function? With the help of this one. After giving this, you need to give semicolon. Okay. In addition equals to add x comma y inside the parenthesis, then the semicolon. It is called the function calling. We call out the function now, and the entire calculation, whatever the values is there, x and y, x is 10, 5, this value will be passed. When it called add, the calling cursor will come here, add, and it will initialize x value as 10, y value as 5 with this one. Now x value as 10, it will be a value as 10, b value as 10, y value is 5, now b value is 5. So these value will be passed to this parameter. Now you can understand when it goes this side. Now int a equals to 10, b equals to 5. Here int a equals to 10, b equals to 5. 10 and 5 will be sum up. 10 plus 5, 15. 15 will get stored in this variable that is called sum.
दैट इज कॉल्ड सम। जो वैल्यू आपने यहाँ पे पास किया, लेट अंडरस्टैंड इन हिंदी। सो 10, x का वैल्यू 10 यहाँ पे जो कि ग्लोबल वेरिएबल है, y का वैल्यू 5 यहाँ पे जो कि ग्लोबल वेरिएबल है। add is a function name. When add function called along with these two value, it will be called here. add function यहाँ पे आ गया, उसके बाद क्या है 10 और 5 जो कि पास कर जाएगा। This value will be passed to this int a, int b. int a का वैल्यू 10 है और b का वैल्यू 5 है because of this global variable assigned value. Okay, जैसे ही ये वैल्यू यहाँ पे गया, एक वेरिएबल सम है जिसमें कैलकुलेशन हो रहा है, द ऑपरेशंस परफॉर्म a प्लस b, a 10 b 5, यहाँ पे 15 स्टोर कर जाएगा सम पे। द वैल्यू गेट स्टोर 15 इन सम, इट विल रिटर्न सम। जब ये वैल्यू रिटर्न करेगा सम it will get return some value is what, nothing but what, 15, that means 15. This is the 15 value will get stored here in addition. Understood? एडिशन में स्टोर कर गया। अब यहां पे आप मेन मेथड में प्रिंट कर सकते हो, प्रिंट f sum of परसेंटाइल d n, यहां पे क्या एडिशन कर दो, एडिशन, क्योंकि एडिशन में ही हमारे पास वैल्यू है, ये वैल्यू एडिशन है, दिस वेरिएबल, इस वेरिएबल में एडिशन में ही 15 है, तो ये एडिशन प्रिंट कर देंगे, प्रिंट एफ। तो प्रिंट एफ जो हो रहा है यहां पे नहीं हो रहा है, इंट रिटर्न टाइप इंट जिसमें है वहां पे कुछ भी आप प्रिंट नहीं करो, वहां पे सिर्फ रिटर्न कर रहे हो वैल्यू। ये वैल्यू को रिटर्न करके यहाँ पे थ्रो करते हैं और ये 15 जो 15 है यहाँ एडिशन वाले वेरिएबल में स्टोर कर जाता है। एंड दिस एडिशन, दिस वेरिएबल नीड टू बी प्रिंटेड बाय द हेल्प ऑफ printf. This is the things happened in function with return type. Okay, यहाँ पे हो गया, ये एक फंक्शन का काम खत्म। नेक्स्ट अदर फंक्शन you need to call, not you need to display because void, others क्या है, void है, तो वहां पे आपको डिस्प्ले करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, क्या करोगे नेक्स्ट फंक्शन, पहला फंक्शन तो int ये वेरिएबल लेकर के कॉल किया मैंने, लेकिन इसमें क्या करेंगे, डायरेक्टली वी कैन कॉल आउट मल्टीप्लाई। देन पैरामीटर क्या है, पैरामीटर आपने यहां से उठाया x, जो कि दो पैरामीटर है ना, x y, डोंट नीड टू डिफाइन अगेन एंड अगेन बिकॉज यहाँ पे आपने इंट डेटा टाइप डिफाइन कर दिया है, y का इंट डिफाइन कर दिया। x का वैल्यू क्या है 10, 5 का वैल्यू 5, y का वैल्यू 5 है। These two value 10 and 5 will passed when this function call, this is called function calling, this is function calling. Okay, when you write this one it means what, function called. ओके जब आपने फंक्शन को कॉल कर दिया, इसका मतलब क्या हो गया कि ये कर्सर यहां पे आ गया। जैसे देखा मल्टीप्लाई एक फंक्शन है जो कि कॉल्ड आउट हुआ है मेन मेथड के थ्रू, देन इट विल सी दो वैल्यू पास करना है x और y का, जो कि 10 है और 5 है। x वैल्यू विल बी असाइंड टू a दैट इज 10, y वैल्यू विल असाइन टू b दैट इज 5। 10 and 5 will get stored assigned here, and this 10 and 5 will assume as a and b, and here will be calculation 10 into 5, that will give 50. Okay, 50 वैल्यू ये कहां पे स्टोर हुआ, दिस इज द वेरिएबल दैट इज कॉल्ड प्रोडक्ट। इस वेरिएबल में 15 स्टोर करके अब इस वेरिएबल को आपको डिस्प्ले करना है, क्योंकि यहाँ पे आप डिस्प्ले कर सकते हो बिकॉज ऑफ वॉइड देने से ही आपने डिस्प्ले किया, आप रिटर्न नहीं कर रहे हो, यू आर नॉट रिटर्निंग द वैल्यू, दैट मींस यू आर डिस्प्लेइंग द वैल्यू बिकॉज ऑफ द रिटर्न टाइप। यहाँ पे वॉइड है, दैट्स इट्स अलाउ टू डिस्प्ले द मैसेज, इट्स नल द रिटर्न टाइप, you don't allow to return any value. Here printf the sum of the number, ये वेरिएबल को मैंने प्रिंट कर दिया जो कि 50। आउटपुट क्या आएगा, पहला आउटपुट 15, दूसरा आउटपुट 50। So this is the most important logics of function we have applied here. अगर यही एग्जांपल्स को आपने देखा कि फंक्शंस को पहले एट द बिगनिंग आपने लिखा, जब आप ये फंक्शन को एट द बिगनिंग नहीं करते हो, you have started your program after hash include stdio.h, ठीक है, आपने क्या किया, मेन मेथड से ही शुरू नहीं, बल्कि आपने मेन मेथड से शुरू किया, फंक्शन स्टार्ट नहीं किया, स्टार्टिंग में आपने फंक्शन डिफाइन नहीं किया बल्कि मेन मेथड से। तो ये मेन मेथड से पहले आप जब भी ये फंक्शन को कॉल करोगे तो ये सर्च करेगा कि इज देयर एनी डेफिनेशन ऑफ द फंक्शन एग्जिस्ट, इट विल फेल, इट विल गिव एरर बिकॉज फंक्शन आपने सेकेंडली, ये फर्स्ट ये सेकेंड, आपने फंक्शन को मेन मेथड के बाद डिफाइन कर रहे हो, तो दैट मींस इट विल गिव एरर। सो उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, ठीक उसी तरीके से इंड मेन मेथड से पहले, बिफोर मेन मेथड आपको डिक्लेरेशन देना होगा, लाइक इंट ऐड पैरामीटर इंट a इंट b सेमीकोलन, this should be written just after hash include stdio.h
बिफोर एक और दूसरा फंक्शन क्या है, void multiply along with int a int b। ओके, यहां पे क्या हो गया, आपने जो भी लिखा है यहां पे, ये तो मेन मेथड के अंदर, उसके बाद आप क्या कर रहे हो, मेन मेथड इंट मेन, ये मेन मेथड। तो ये डिक्लेयर करना जरूरी है विद द हेल्प ऑफ सेमीकोलन। द डिक्लेरेशन मस्ट बी एट द बिगिनिंग बिफोर मेन मेथड। आफ्टर मेन मेथड यू कैन राइट डाउन इन द सेकंड पार्ट ऑफ द प्रोग्राम द फंक्शन definition. This is all about functions. Hope this video will be helping you in your semester exams, viva, technicals, whatever you are preparing. So this video will be help you. Lots of problems will be solved. Lots of doubts will be solved. Okay. The only thing is that you must be dedicated with your study. You just watch this video again and again. If you have not understood properly, आप स्पीड कम करके देख सकते हो, स्पीड बढ़ा करके देख सकते हो यूट्यूब में, एवरीथिंग इज देयर। यू जस्ट रिक्वायर्ड टू गिव योर प्रीशियस टाइम टू अंडरस्टैंड। एग्जाम टाइम में दिस टॉपिक विल बी रियली हेल्पफुल फॉर योर प्रैक्टिकल एग्जाम ऑल्सो। होप यू हैव अंडरस्टूड द एंटायर कॉन्सेप्ट। अगेन आई एम आस्किंग यू टू like, share and subscribe my channel for more in-depth video, for more in detail about the CSIT different courses, different subjects. So this is all about the things which we have explained. Okay, so in the next video we'll try to cover different concept of C programming and other subjects. Bye bye, take care, thank you.